अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू उर्दू बिटकॉइन चैनल। खुश आमदीद आप लोगों को। मैं फ़ैसल आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ उर्दू बिटकॉइन की आज की लाइव ट्रांसमिशन लेके। आज की ट्रांसमिशन भी दोनों इंग्लिश उर्दू दोनों में होगी और मिक्स होगी। जैसे जैसे हम सेगमेंट्स में अपने आगे बढ़ते जाएंगे दोनों इंग्लिश उर्दू में मिक्स करेंगे। वील डू अ मिक्स transmission, not just first English and then Urdu, but as and when we'll go through our topics today, we'll discuss both in English and Urdu simultaneously. So we are going to discuss short-term and long-term price targets for Bitcoin, how the Bitcoin is doing, what we discussed last night. We'll follow up on that, and then also we'll look into some price targets for Metahero and God Unchained, that the projects I just introduced you a couple of days before. So how these projects are doing and where they are heading. Very exciting, very informative live stream today. So stay tuned. You don't want to miss that. हम बहुत सारी चीज़ें देखेंगे आज। ऑन चेन डेटा एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस भी देखेंगे प्राइस टारगेट्स के। तो बिल्कुल भी मिस करने वाली चीज़ नहीं है। आगे आज कल और परसों में ख़ास तौर पे क्या प्राइस टारगेट्स होंगे, किस तरह से मूव कर सकता है बिटकॉइन और मार्केट्स, इन सब पे नज़र डालेंगे। जस्ट स्टे ट्यून। Alright, so first thing first, let's continue from last night. What we did last night is this technical analysis 4-hour chart of Bitcoin. We formed this blue line at 53,500, and we saw that this support line is very important. And why it is important, we discussed in last night stream. And we saw that Bitcoin actually bounced back 4 times just just day before yesterday, and continue to bounce back up in the lower ribbon here right now. So which is a very good sign. But where it is heading from here, that's the point of discussion today, that where it is going up or one more dip, and why I'm looking at one more dip to form a perfect W pattern here and then go up. So why there's another dip expected by tomorrow evening. So this is very important. I'll show you some analysis on that. Although if you look on the bottom, the MACD is going to cross right now, maybe next candle or so, and it will turn. It is trying to turn green right now as we are speaking. That how these bars are have changed their colors, and they're turning. MACD is showing that um, the trend is going to be turning to green side. Also, we have a buy signal here, and then on the momentum wave down here we have a green dot here. So and RSI also sitting at 41. So all the signs are bullish. All the signs are very good for the Bitcoin to go up from this point onwards. But why I'm saying that there may be one more dip is coming tomorrow. Today maybe the price action more upside. Maybe it can go more, little bit more up today, and then by tomorrow evening it'll go down back to, and it's maybe testing this support level again uh, before bouncing back up. Why I'm saying that? Um, because of a very good reason, that people who knows that there is a CME feature gap, and the CME on Friday, it closed at 54,400, and Bitcoin right now 50 right there 54,900. And so I'm expecting, because of these short term indicators that are showing that the Bitcoin is going to go up, so I'm expecting that today, rest of the day, Bitcoin might go up a little bit. Can be a good price action towards the upside,
and everybody gets FOMO'd in that tonight and maybe tomorrow morning as well. But then by tomorrow evening, when the CME gap needs to get filled, and mostly they get filled, it bounces back. It tries to bounce back like 54 400 range back down there. There's a possibility. If Bitcoin doesn't take a run today and stays in the same level, then we can say that it is already around the range of CME closeout price. So we don't expect much. If it goes sideways, which I don't expect today because of the low volumes, I expect that the sentiment's looking on the higher side. All the indicators are looking to go up. So I'm expecting that later today in the evening, it might fly up a little bit, and then by tomorrow evening it goes back down before it makes a big run that we are expecting. That's my take on it. Let's quickly explain this in Urdu and then we'll go to the next segment. So मैं ये देख रहा हूँ कि जो बिटकॉइन है वो इस वक्त हमने कल जो डिस्कस किया था उसको 4 दफ़ा टच किया था हमारी सपोर्ट लाइन जो कि हमने फॉर्म किया काफ़ी पीछे से कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लाइन है 53,500 की, और उसको 4 दफ़ा ऑलरेडी टच करने के बाद ऊपर की तरफ बाय सिग्नल्स हैं। मैकडी जो है वो क्रॉस कर रहा है, ऊपर की तरफ ग्रीन की तरफ जा रहा है, अपना कलर चेंज करके क्रॉस हो सकता है। ये ग्रीन डॉट यहाँ पर आया, RSI काफ़ी लो लेवल पे है। तो सारे जो इंडिकेटर्स जो हमें शो कर रहे हैं वो ये कि बिटकॉइन को ऊपर जाना चाहिए, जो कि बहुत शॉर्ट टर्म में मैं समझता हूँ कि आज सारा दिन में ये जाएगा भी ऊपर, और आज शाम तक ये ऊपर जाएगा। सुबह तक हो सकता है ये प्राइस एक्शन इसका ऊपर की तरफ हो, लेकिन कल शाम को फिर ये एक डिप ज़रूर लेगा। ये मेरी प्रेडिक्शन है कि कल शाम को एक डिप ज़रूर लेगा और एक कंप्लीट प्रॉपर डब्ल्यू फॉर्म करेगा यहाँ पर बिफोर इट मेक अ बिग रन नेक्स्ट वीक। तो ये क्यों होगा, तो मैंने अभी आपको जैसे इंग्लिश में बताया कि CME गैप जो है वो फिल नॉर्मली होता है फ्राइडे इवनिंग्स को, और CME जो सिट कर रहा है वो 54,400 पे सिट कर रहा है। बिटकॉइन की प्राइसेस जो 54,900 हैं, जो कि ऑलमोस्ट CME गैप के आसपास ही हैं। तो अगर बिटकॉइन अगले 24 घंटे में ये समझ लें कि अगर यहीं इसी रेंज में रहता है और अपनी पोजीशन होल्ड करता है, तो मैं फिर बहुत ज़्यादा कोई बड़ा डिप एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। लेकिन अगर ये जो इंडिकेटर्स बता रहे हैं, जो लग रहा है कि आज सारा दिन में और रात तक जो है, कल सुबह तक होता है बिटकॉइन थोड़ा रन अप टुवर्ड्स अप साइड ले, तो अगर ऐसा करता है तो कल दोपहर तक, कल सुबह तक अगर ऐसा होता है तो सेव योर प्रॉफिट्स आई वुड से, क्योंकि फिर एक डिप ज़रूर लेगा वो CME गैप को फिल करने के लिए नीचे की तरफ। हो सकता है हमारे जो 53,500 का जो सपोर्ट लाइन है इसको दोबारा टेस्ट करें, और अगर ऐसा होता है तो बस ये समझ लें कि ये आखिरी डिप होगी, और फिर उसके बाद कोई सीलिंग, कोई ऊपर कोई वजह नहीं रह जाती सिवाय एक चीज़ की, जो कि मैं आपसे डिस्कस करता हूँ पहले इंग्लिश उर्दू दोनों में। वो ये है कि यहाँ इस डिप के बाद फिर सीधा ऊपर की तरफ जाएगा बिटकॉइन अपने टारगेट्स को, और वो कहाँ है वो भी हम देखते हैं। बड़े ज़बरदस्त चार्ट्स हैं मेरे पास आपको दिखाने के लिए, कंपैरिजन ख़ासतौर पर 2017 के साथ जो है इसका बिटकॉइन का इस साल से जो कर रहे हैं, उसमें बड़े ज़बरदस्त कुछ चार्ट्स हैं मेरे पास, वो मैं भी आपको शेयर करता हूँ। तो एज आई also explain in Urdu, there is a chance that Bitcoin dips one more time tomorrow evening, because to fill up CME gap before it happens today, it can go up, and then tomorrow evening it can go down again to form a complete W and then take up big heap upside. The only one thing can stop that heap now. There's nothing else. All the options, all the futures are expired last Friday. The only thing is that thing that causes this big dip on Friday, and that is obviously a new variant, how it rolled out and how the markets reacts on Monday when the stock markets open up on Monday morning, how they react to it, because the news today are coming up that variant may be already be in US. So a lot of travel bans are happening right now in South African countries. So that is the news that we have to watch out for. That can make a small time delayed in our run up that we are expecting.
Otherwise, there's no chance that Bitcoin can stop after tomorrow's CME gap filled out tomorrow evening. So that's my take on it. I have a couple of really interesting charts to show, but let me explain this in Urdu and then I'll come back to those charts. So इस चीज़ को ध्यान में रखिए कि जैसे मैंने बताया कि इस वक्त जो नया वेरिएंट है कोविड का वो किस तरह से रोल आउट प्ले आउट करता है अभी, और इसकी न्यूज़ मज़ीद आ रही हैं कि ट्रैवल बैन्स होना शुरू हो गए साउथ अफ्रीका में, यूएस में ऑलरेडी हो सकता है मौजूद हो वायरस आ चुका हो। तो ये तमाम चीज़ें किस तरीके से आगे न्यूज़ रोल आउट करती हैं, बैन दोबारा से लॉकडाउन की तरफ जाती हैं कंट्रीज़, क्या होता है उसके ऊपर सारा डिपेंड करेगा। अगला जो नेक्स्ट लेग अब हम जो देख रहे हैं वो उसको डिले कर सकता है। वो चीज़ सिर्फ एक वही चीज़ है, एक ब्लैक सॉन इवेंट कह लें या ग्रे रैन इवेंट कह लें उसको आप, वो एक चीज़ उसको जो है वो रोक सकती है। अदरवाइज़ कल के CME गैप के फिल करने के बाद कोई चांस रह नहीं आता, सारे ऑप्शन फ्यूचर सब एक्सपायर हो चुके हैं फ्राइडे को जो होने थे, तो कोई इवेंट ऐसा रह नहीं गया जो इसको रोक सके। अब एक और चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ कि बिटकॉइन का बुल रन जो है वो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ओवर हो जाएगा। ये जो इस वक्त जो भी पैंडेमिक और इसकी न्यूज़ की वजह से हो सकता है ये इसको बेयर मार्केट में चला जाए बिटकॉइन। ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि अगर हम CBBI नंबर्स को देखें तो स्टिल वेरी लो 58 पर है, और स्टिल आप देख लें कि जब तक ये 100 पर टच नहीं करता है अब तक जो है बुल रन ख़त्म नहीं होते पिछले जितने भी हैं। तो अभी भी बहुत ही लोअर लेवल पर है, बिल्कुल बीच में है अभी, इसका जहाँ पर है उससे उससे डबल उसको जाना बाकी है इसके ऊपर। और जब तक ये 100 को टच नहीं करता तो हमें कोई ऐसी परेशानी लाक नहीं होनी चाहिए कि बुल रन ओवर हो चुका है। तो एक्सटेंडेड बुल रन है एक्चुअली, टेक्निकली बुल रन को ओवर हो जाना चाहिए था सितंबर अक्टूबर में, लेकिन हम देख रहे हैं कि मुसलसल प्राइस टारगेट जो है ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो देयर इज़ नो रीज़न टू बॉदर अबाउट इट के बुल रन ओवर हो चुका है या हो जाएगा इस पेंडेमिक के। अगर होता भी छोटा सा डिप आता भी है और अगर इसको कंटिन्यू थोड़ा सा साइडवेज मूवमेंट रहती भी है तो इट्स जस्ट अ टेम्परेरी, but it will take its full term towards up. So yeah, I already showed you guys this CBBIs. We are not in the end of bull run or anywhere near. We are in the middle of it. So still the big heaps are coming up. So don't worry about it. Even if this new variant hold on to that big run for a while, it is just going to be a short term hold up, and then it will go up very quickly, very nicely. So this is also a very good chart. But besides that, I have a couple of charts to show you guys. Very interesting. I first of all, this one I shot out. I acknowledge that I got this one from Kelly Callum Twitter, the guy who actually support Crypto Jab on his technical analysis. So I give him a full credit for it. I'm just doing here to introduce you in Urdu this one, but let me just explain you in English quickly what it is. It's a comparison he did. He got this from someone also. It's a comparison of 8-hour chart that in 2017 and 2021, what is the similarity and where we are right now. So we are exactly at the 0.382 Fibonacci levels. You can see that this price action, and next we are having this dip right now, this one, and then next we are expecting a big leg up towards these levels. So if that happens, the next leg up should be here somewhere around $66,000, and then maybe a little bit consolidation like here, and then it'll go up again above $78,000 or $80,000 range. So it's very similar. It's just date wise, it's just 1 week delayed. This cycle is this time. You can see the dates, but not much as far as the pattern is concerned. The pattern is very similar, and even if you look at the RSIs are very similar. Look at this.
the RSI where we are right now. Very similar. So all the price action, the RSI, all the actions depicting the same pattern of 2017, just a week delayed. uh, तो मैं अपने उर्दू ऑडियंस के लिए बता दूं कि ये जो चार्ट हम देख रहे हैं ये कंपैरिजन है 2017 2021 के पैटर्न्स का 8 आवर्स 8 घंटे के चार्ट के ऊपर। और ये जो कैलम है उनका ट्विटर अकाउंट है, उस पर उन्होंने शेयर किया है। वो भी उन्होंने भी किसी से किसी से दिया है, उन्होंने लिया है उन्होंने भी किसी से। और वो जो क्रिप्टो जैब है उनके टेक्निकल एनालिस्ट हैं। उनको मैं फुल क्रेडिट दूंगा शेयर करने का। तो वो इस चार्ट में वो बिल्कुल क्लियरली बता रहे हैं कि एग्जैक्टली सेम पैटर्न है। जैसे हम सिर्फ एक हफ्ते डिलेड है बिटकॉइन 2017 और 2021 के माबैन। हम जहाँ पर इस वक्त हैं फिबोनाची लेवल जो था 0.38 का, उस पर है मौजूद। और बिल्कुल एग्जैक्टली अब यहाँ से नेक्स्ट लेग अब हो सकता है ये 1 जो है फिबोनाची लेवल पे, जो कि यहाँ पर हमें नेक्स्ट प्राइस टारगेट $66,000 का दे रहा है। उसके बाद कुछ कंसोलिडेशन हो सकती है और फिर उसके बाद नेक्स्ट लेग अब जो है वो $80,000 तक जा सकता है। तो और उसके RSI लेवल्स बिल्कुल सिमिलर हैं, आप देख सकते हैं बिल्कुल सेम पैटर्न में। तो ये बहुत ही एक्यूरेटली एकदम डिपिक्ट कर रहा है 2017 को, जो कि बहुत सारे दूसरे एनालिसिस भी इसकी बात कर रहे हैं। इसके अलावा एक और चार्ट जो कि क्रिप्टो ने शेयर किया है, और वो उन्होंने जो है वो डेली कैंडल्स के ऊपर उन्होंने बात की है। ये मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा। उन्होंने ये 3 फॉलिंग वेजेस का हवाला दिया है। अगर हम बिटकॉइन के डेली चार्ट्स को देखें तो ये हर कैंडल जो एक दिन को शो कर रही है। और इस वक्त जो है वो उन्होंने बताया कि हम जब भी फॉलिंग वेजेस जो होती हैं वो 70% चांसेस होते हैं कि उसके बाद वो अपवर्ड्स जो हैं वो ब्रेकआउट करती हैं। तो अभी जुलाई में भी जिस तरीके से फॉलिंग वेज से ऊपर की तरफ गया है बिटकॉइन, तकरीबन यहाँ से आप देख सकते हैं 50-60% ऊपर गया है। इसी तरीके से अभी सितंबर में भी ये फॉलिंग वेज थी, इससे इसने ब्रेकआउट किया, ऊपर की तरफ आया। इसी तरीके से यहाँ से अगर भी ये ब्रेकआउट करता है, अभी बिल्कुल हम यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ से अगर ब्रेकआउट करता है ये अभी भी गुंजाइश है इस वेज के अंदर। आप देख सकते हैं एक आध डिप की और जो कि मैंने बात की अभी आपसे। उसके बाद जो है ये ऊपर नेक्स्ट जो है उसका टारगेट वही 80,000 के आसपास है। तो ये बहुत ही एक्यूरेटली प्ले आउट कर रहा है ये भी टेक्निकल एनालिसिस जो कि क्रिप्टो ने शेयर किए हैं। तो ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सो लेट मी एक्सप्लेन इट इन इंग्लिश नाउ. This is from Crypto. He mentioned these 3 falling wedges and how normally 30%, 70% chances are that these falling wedges go break out towards upside. And the last 2 falling wedges did that exactly in July and in September. That it went up after breaking out these falling wedges, and we are in the falling wedge right now. We might have one more dip, as I explained, to complete this wedge, and then it can break out towards upside. And the price target again for this one is around $80,000. So this is another chart that I wanted to show you guys. Now we have seen a lot of Bitcoin charts and analysis, and you have a good idea that we might have tonight, we might have a small run up, and then we may see one little drop by tomorrow evening, and then the sky is the limit. Or we could say that good chance that we'll see all-time high again next week. तो अगले हफ्ते अच्छा टाइम है बिटकॉइन के लिए मोस्ट लाइकली। एक शॉर्ट टर्म में और मीडियम टर्म के आपको टारगेट्स दे दिए हैं मैंने। लॉन्ग टर्म कह लें आप उसको, मीडियम टर्म कह लें, कि अगले आने वाले जो 3 से 4 हफ्ते हैं वो बहुत ही एक्सप्लोसिव हो सकते हैं। बहुत तेज़ी के साथ बिटकॉइन के प्राइसेस ऊपर आ सकते हैं, और उसकी वजूहत मैंने आपको बता दी सारे लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म एनालिसिस करके। आई होप ये आपने एंजॉय किया होगा इसको, और अंदाज़ा हुआ आपको कि कितने एक्यूरेटली टेक्निकल एनालिसिस जो है वो प्ले आउट करते हैं। अच्छा, अब हम कुछ बात करेंगे जो अपने नए प्रोजेक्ट्स की, जो कि हमने
अभी रिसेंटली डिस्कस किए हैं, आपको बताया, इंट्रोड्यूस करा है आपको। इसमें से एक गॉड्स अनचेन्ड है, और एक जो है वो मेटा हीरो। हमने आपको यहाँ पर इस स्ट्रीम में ब्लैक फ्राइडे को स्ट्रीम की थी मैंने, क्योंकि मेटा हीरो बहुत ही एक्सक्लूसिवली, बाकी सारे इतने ज़्यादा 10% 20-15% डिप कर गए थे, जबकि मेटा हीरो जो था वो ग्रीन टेरिटरी में था उस भी। तो उसको लेके मैंने आपको बताया था ये क्यों है और क्या इम्पोर्टेंट, कितना ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है मेटा हीरो। और उसकी प्राइस प्रिडिक्शन करते हैं हम इन दोनों की, इन दोनों ज़बरदस्त कॉइन्स की, कि क्या हो सकते हैं। सबसे पहले हम गॉड्स अनचेन को एक्सप्लोर करते हैं। लेट्स एक्सप्लोर गॉड्स अनचेन फर्स्ट फॉर द प्राइस प्रेडिक्शन राइट नाउ। You can see it's coming up to $5. It is a gaming coin. We have already discussed in detail what it is, where you can buy it and everything. You can check out my video right here, Gods Unchained. So um, where it can go, how high it can go from here. To know that, we have to compare an Axie Infinity as a just a model, because Axie Infinity also a play to earn game, and is very popular right now. It has its run, so we could see a similar run for Gods Unchained, because it has all the ingredients, even more what Axie Infinity has to offer. So to predict the price, we have to see uh, its current market cap. Yeah, so here we can pick up some facts about it. So it has 23 million circulating supplies right now, and if we compare this to Axie Infinity, it has um, it has 60 million circulating supplies. So it's already the supply of the coins is like 3 times less than Axie Infinity, and the total market cap, if you look at the market cap of Axie Infinity, is 7 billion, almost 8 billion US dollar, and if you look at the market cap of Gods Unchained is $121 million only. So there's easily, I would say easily, if it has to catch up its market cap, um, we we could easily see, um, well, we can calculate. So let me do some calculation here. If we see that almost 7.8 billion and 121 million only, so there's a chance of, yeah, so almost it can go as high as 64 into 5, yeah, so 64 times high it can go to match up Axie Infinity. So if you multiply by 64, that $5, it gives you 300, over $300 per coin target, which is not bad. If you think about the tokenomics, and you can start playing God Unchained without any money, and you start earning money rather than input first your money. Like Axie Infinity, you need 3 Axie Infinities, and right now one Axie Infinity is $128. So you need to start playing this game, at least you need $400 to begin with Axie Infinity, rather than Gods Unchained. You don't need anything, you just go ahead and start earning your coins by playing it. So it's a big advantage, as I say, um, in this. So it has all the ingredients, as I say, NFT marketplace, everything is there. um, Great content from one of the YouTuber. If you understand English, you can go ahead and check um, mustache, who
who has a big mustache. Yeah, that's the name of the YouTuber, I think, who's having a complete tutorial how to play this game. You can go and check him out. So Crypto Mustache, yeah, I think that's his name. You can check this out. So that's my price prediction for this game. That whenever it is going to get a run of its lifetime, whenever mass adoption takes place, it can go as high as $300 per coin. So right now it's a very bargain price, or it's a very beginning. You can say it's still um, 437 rank on coin market cap, so it's very new, it's very uh, low cap jam, I would say. A very high ceiling for to run up. सो इन उर्दू इफ़ आई कंपेयर, मैं आपको बताता हूँ कंपैरिजन मैंने एक्सी इन्फिनिटी के साथ किया है इसका। जो एक्सी इन्फिनिटी काफ़ी अपना मशहूर हो चुका है, कॉइन काफ़ी ऊपर आ चुका है। तो उसके मार्केट कैप और उसकी कॉइन सप्लाईज को अगर लेते हुए हमने उसको मल्टीप्लाई डिवाइड किया गॉड्स अनचेन के कॉइन्स के साथ और इनकी मार्केट कैप के साथ, तो हमें पता चलता है कि इसमें गॉड्स अनचेन में भी जो ऊपर की जो सीलिंग है कितना ऊपर आ सकता है। इसमें बहुत पोटेंशियल है, इसमें तकरीबन $300 से ऊपर का एक कॉइन एक हो सकता है। और इसके जो टोकनॉमिक्स हैं बड़े ज़बरदस्त हैं। आपको शुरू करने के लिए गेम कोई पैसा नहीं लगाना पड़ा है, कोई टोकन्स नहीं चाहिए, बल्कि आप अर्न कर सकते हैं टोकन्स को खेलते हुए इस गेम को। जबकि एक्सी इन्फिनिटी को शुरू करने के लिए कम से कम 3 टोकन्स चाहिए होते हैं आपको, जो कि $128 का एक है। $400 आपको चाहिए गेम शुरू करने के लिए। तो इट्स अ बिग थिंग। और ख़ास तौर पर कंट्रीज़ लाइक फ़िलिपींस और वहाँ पर तो लोगों ने अपना जो है उनका रोज़ी रोटी इसी से वाबस्ता है, इसी से पैसा कमा रहे हैं वो। तो उनको उनके लिए तो बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है, जहाँ पर $2 उनका जो है वो एवरेज इनकम होती है एक महीने की, मंथली, नॉट डेली, मंथली। तो उनके लिए $400 की इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है। तो वहाँ पर फिर दूसरी चीज़ें फिर आ गई हैं, स्कॉलरशिप्स वगैरह लोग इन्वेस्ट करते हैं कि ठीक है हमसे ले लें पैसा, आप खेलें, इसको पैसा बनाएं और उसका जो भी बैन बनाएंगे आप उसका 30% हमें दे दें। इस तरह की चीज़ें चल रही हैं वहाँ फिलिपीन में। तो ऐसी कंट्रीज़ के लिए, ऐसे लोगों के लिए गॉड्स अनचेन एक बड़ा ज़बरदस्त अल्टरनेट है, बड़ा ज़बरदस्त गेम है, जो कि वो स्टार्टिंग से ही, शुरू से ही पैसा बनाना शुरू कर सकते हैं। तो किसी किस्म की स्कॉलरशिप की ज़रूरत नहीं है, वो इसमें जाएँ और खेलें और पैसा बनाएं। और ये लाइव NFT बेस्ड है, बहुत ज़बरदस्त नया गेम। तो इसके प्राइस टारगेट देख लिया हमने, गॉड अनचेन के 300 से ज़्यादा का किसी फ्यूचर के करीब में मोस्ट लाइकली ये रन अप ले सकता है इतना बड़ा। तो इसका काफ़ी हाई पोटेंशियल है। एक और जो कॉइन जो आपने रिसेंटली इंट्रोड्यूस करा है आपको, वो था मेटा हीरो का। ये इस तरह से डिफरेंट है थोड़ा दूसरे जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं। जब हमने डिस्कस किया था इसको, तो हमने बताया था कि मेटा हीरो जो है वो बहुत डिफरेंट प्रोजेक्ट है दूसरे प्रोजेक्ट्स के मुकाबले में। इट हैज़ एक्चुअली इसके जिसको कहना चाहिए कि रियल वर्ल्ड वैल्यू है इसकी। इसमें बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट्स हैं एक्चुअली। जो जो स्कैनर्स हैं इसके, वो उसको डिप्लॉय हो रहे हैं वो मुख्तलिफ जगहों पे, दुबई में और सब जगह हो चुके हैं। वहाँ पर लोगों ने करना शुरू किया। क्रिप्टो जिनका मैंने भी हवाला दिया था, उन्होंने अपने आप को स्कैन भी कराया वहाँ उसके अंदर। तो सिर्फ लोगों को ही स्कैन नहीं, बल्कि आप ऑब्जेक्ट्स भी स्कैन कर सकते हैं, उसको NFTs बना सकते हैं और तमाम चीज़ें 3D ऑब्जेक्ट्स काफ़ी ह्यूज किस्म के। तो एक जो चैम्बर है उसका स्कैनर का, उसमें हज़ारों कैमरे और पता नहीं कितने लातादाद कंप्यूटर्स हैं, और एक साथ 4 लोगों को स्कैन कर सकता है वो एक चैम्बर। उसको उसकी वेबसाइट पे अगर आप जाके देखेंगे इसको metahero.io की, तो आपको पता चलेगा कि बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट, बड़ी ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं। तो एक्चुअली टेंजिबल इन्वेस्टमेंट्स हैं, जिनको अनलाइक एनी गेमिंग और एनी अदर प्लेटफॉर्म के हर चीज़ जो है वो क्लाउड बेस्ड है या हवा में, ऐसा नहीं है, बल्कि यू कैन टच समथिंग इस तरह की। इस लिहाज से ब्लॉकचेन में एक थोड़ा सा डिफरेंट प्रोजेक्ट है, जिसको आप फिज़िकली देख सकते हैं इस प्रोजेक्ट की वैल्यू को और एवेल्यूएट कर सकते हैं। इसीलिए इसका बहुत ज़्यादा अपसाइड है। ये मैंने पिक भी ये इसीलिए किया था फ्राइडे को कि ये वाहिद कॉइन था जो कि ग्रीन में था, जबकि बाकी सारे कॉइन्स जो थे वो रेड में थे। तो अभी भी आप देख लीजिए कितना अभी भी 10% ये अप हुआ है, और मज़ीद इसमें बहुत गुंजाइश है ऊपर जाने की इस कॉइन में। ये मेरी अगर इसके आप मार्केट कैप देखें तो अभी सिर्फ 710 मिलियन डॉलर का उसका मार्केट कैप है, और इसकी जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है वो तकरीबन 5 बिलियन कॉइन्स की। तो ये
क्योंकि कॉइन्स बहुत ज़्यादा हैं, 5 बिलियन कॉइन है, तो ये ऐसा तो नहीं होगा कि $300-400 या $500 का चलेगा, इस तरह से तो नहीं होगा ये। जो इसकी प्राइस टारगेट हो सकती हैं वो जो मुस्तकबिल करीब में हो सकती हैं बहुत तेज़ी के साथ, ये जैसे इसकी डिप्लॉयमेंट होगी, लोगों में अवेयरनेस बढ़ेगी, तो आराम से इजीली आई कैन सी के आराम से $3-4 का $5 का तो आराम से जा सकता है यहाँ से। तो 10x यहाँ से होना, इसके लिए कोई 10-20x होना कोई बड़ी बात नहीं है। अभी ये आप देखें तो रैंक जो है इसका 2782 वह रैंक है इस पर कॉइन मार्केट कैप पर, तो उसके अपसाइड बहुत ज़्यादा है इसके भी। ईज़िली मतलब आप जो है इसमें बहुत ही आराम से बहुत शॉर्ट टर्म में ये जो है वो 10-20x पैसे बन सकते हैं इसके अंदर इन्वेस्टमेंट में। और लॉन्ग टर्म में तो इससे कोई लिमिट ही नहीं है कि जितना मेटावर्स के अंदर इस वक्त काम हो रहा है। और नेक्स्ट बुल रन की अगर हम बात करें कि 1-2 साल के बाद जब नेक्स्ट बुल रन शुरू होगा तो वो कहाँ लेके जाएगा मेटावर्स को, तो हम जितने भी प्रोजेक्ट्स इस वक्त ख़ासतौर पर फेसबुक जैसा प्रोजेक्ट जो वो मेटावर्स में जा रहा है अपना आपको लेके, जो फुल फ्लैज वो चल रहा होगा, तो उसमें फिर क्या इसकी वैल्यू होगी इस प्रोजेक्ट की, वो तो हम सोच भी नहीं सकते। मे बी हु नोस के थाउजेंड्स में चला जाए फिर ये कॉइन। तो ये बात कर रहे हैं अपनी 2 से 3 साल 4 साल की, कि एक कॉइन जो कि अभी 14 सेंट का है, हम बात कर रहे हैं कि थाउजेंड्स में चला जाए। बिग गेंस है, इसका बहुत ज़्यादा अपसाइड है इसका। तो नेवर स्लीप ऑन दिस। फाइनेंशियल एडवाइस नहीं ऑब्वियसली, बट डोंट स्लीप ऑन इट। मेटावर्स, मेटा हीरो जो है उसका गेटवे होगा मेटावर्स का आने वाला दिन जो है उसके। In English, briefly, you must have heard me. Mostly, I'm using English words, so you have an idea that this coin has a very big potential in coming days. Easily can reach to $3, $4, $5 in short term in this bull run, and then next bull run 3 to 4 years. I can see this going way high, like maybe in thousands again. So we are talking about a coin available in 14 cent and going into thousands of dollar in 3-4 years, because it's ranked 2782 in coin market cap. So it's very early. It just came out, this concept, and this they just started marketing in this year in July. It's very new project, but it is something which you can touch. It's a tangible project. It has a huge investment, big investment in the project. Actually you can see those scanners, you can go into those scanners and scan yourself or any big objects to use in your metaverse. So this is very exciting, very amazing, and it's not just they are limiting themselves to gaming or to metaverses, but they are involving themselves into medical fields, which is very huge. We'll see how the implications are, but they are just rolling it out in Q1 of next year. So big things are coming for this project. Never sleep on it. So I hope you enjoyed today's stream. We covered a lot of things, short term, long term, a lot of good projects we covered. So if you like these contents, please like my videos, share my videos, and also subscribe my channel as much as you can, so I can continue these efforts. And thank you very much for listening me. आप सबका शुक्रिया। अगर आपको पसंद आए आज के कंटेंट्स, जो भी हमने प्राइस प्रेडिक्शन दी हैं जिस तरह से शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म की, तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और इसको फैलाने में मेरी मदद कीजिए ताकि मैं कंटिन्यू कर सकूं अपने इस काम को, और आपको इस तरह के अच्छे कॉइन्स, अच्छी न्यूज़ जो भी आप वार्न भी कर सकूँ, अगर जिस तरह हमने कल के बारे में वार्न किया आपको, तो इस तरह से अगर आपको इसकी वैल्यू मिलती है इन वीडियोस से कुछ, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।